सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। आप सुन रहे हैं विद्या प्रभात सुबह सवेरे। दिन नया दुनिया नई, दुनिया नई बातें कई। Hello listener, you are listening to your favorite radio channel Vidya Prabhat Subah Savere. Welcome you all to a special podcast episode on a truly blessed occasion. Eid Miladun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the birth anniversary of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In the silence of the desert, under the stars of the ancient Arabia, a light was born, not of fire or flame, but of mercy, truth and eternal guidance. एक रोशनी जिसका नूर आज तक दुनिया को रास्ता दिखाता है, जिसका पैगाम हर दिल तक पहुंचता है, इंसानियत, सब्र और प्यार का पैगाम. Today we remember the arrival of that light, the birth of the last prophet, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, a man whose character changed the world, whose teaching still heal hearts. मैं हूँ आरजे सैयद उमर और मैं हूँ आरजे सेजल कोल्डे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वेलकम टू दिस मिलाद मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेशल पॉडकास्ट द लाइट ऑफ गाइडेंस. आइए इस पावन दिन पर हम मिलकर याद करें उनके उसूल को, उनके अखलाक, उनकी रहमत और उनकी जिंदगी से मिलने वाली रोशनी. आइए इस रूहानी सफर पर चलते हैं, जहां हम जानेंगे, समझेंगे और महसूस करेंगे उस शख्सियत को जिनकी वजह से इंसानियत ने रोशनी पाई. This is a day of reflection, joy, unity and above all love for the messenger who changed the world with his message of peace and compassion. तमन्ना आपकी सब पूरी हो जाए, हो आपका मुकद्दर इतना रोशन कि आमीन कहने से पहले ही आपकी हर दुआ कबूल हो जाए. सरवर आलम दुनिया जगमगाने आए, दुनिया जगमगाने आए हमके मारो. आप सुन रहे हैं विद्या प्रभात सुबह सवेरे. सुनते रहे सुबह सवेरे. सीने से लगा दे आए, सीने से लगा दे आए. What is Eid Milad? Eid Milad is celebrated in the month of Rabiul Awwal, the third month of the Islamic calendar. It marks the birthday of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who brought the message of truth, justice and mercy to the world. Exactly. He was known as Al-Amin, the trustworthy, even before prophethood. He taught us to be kind, honest, fair and respectful to all people regardless of their background. Over 1400 years ago, on this very day, the Prophet was born in Mecca, in present-day Saudi Arabia, a movement that lit up history with the light of divine guidance. A saying of a prophet. Let's take a moment to reflect on one of the beautiful sayings of the prophet. The best among you are those who have the best manners. At school, this reminds us to practice good characters,
to be polite, helpful, respectful, and to spread positivity, just as the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did throughout his life. Why is it celebrated? Eid-e-Milad is more than just a festive day. It's a time to remember and honor the legacy of the Prophet. We reflect on his teaching of peace, equality, forgiveness, and hope, and try to follow in his footsteps by living a life of sincerity and service to others. Religious importance. Religiously, this day helps us reconnect with our faith. Mosques and homes are beautifully decorated. Nats and sermons are recited. Stories from the Seerah, the Prophet's biography, are shared to help us understand his life and values. Eid-e-Milad is also a day of community and compassion. It's about coming together, people of all ages and backgrounds, sharing food, offering charity, and reaching out to those in need. It reminds us that the Prophet was a champion of the poor, the oppressed, and the orphaned. Where is it celebrated? Eid-e-Milad is celebrated in many countries around the world, including Pakistan, India, Bangladesh, Indonesia, Turkey, the UAE, Egypt, Morocco, and even in Saudi Arabia and Western countries where Muslim communities live. How is it celebrated? Cities are lit up with beautiful lights. Procession and street gathering are held. Mosque host lecture, nasheed and Quran recitations. People engage in acts of kindness, give charity, and prepare meals for their communities. Children learn about the Prophet through storytelling and fun activities. और कोई भी त्योहार खास खाने के बिना अधूरा है. घर में बनती है खीर, शीर खुरमा, बिरयानी और रंगीन जर्दा जो हर किसी का दिल जीत लेती है. These dishes are shared with families, neighbors, and the poor, spreading love and joy, just like the teaching of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. तो आइए जानते हैं ईद-ए-मिलाद से जुड़े कुछ तथ्यों को. ईद-ए-मिलाद पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन को मनाया जाता है. यह इस्लामी कैलेंडर के रबीउल अव्वल महीने की 12 तारीख को मनाई जाती है. इस त्योहार को मौलिदुन नबी या मिलादुन नबी भी कहा जाता है. इसका सार्वजनिक उत्सव 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ. लोग नमाज, जुलूस और दान के साथ इसे मनाते हैं. मस्जिदों और गलियों को रोशनी और बैनरों से सजाया जाता है. पैगंबर की शान में नात पढ़ी जाती है. कई देशों में यह सार्वजनिक अवकाश होता है. यह दिन पैगंबर की शिक्षा और आदर्शों का पालन करने की प्रेरणा देता है. Conclusion. In conclusion, Eid-e-Milad-un-Nabi is not just a celebration of birth. It is a celebration of light, of hope, of compassion, and of the best of humanity. Let's take this day to learn from the Prophet's life, to be better individual, better classmates, and better human beings. Eid-e-Milad-un-Nabi Mubarak to you and your families. Thank you. मुस्तफा या मुस्तफा मरहबा सल्ले अला नाराए इश्क व वफा मरहबा सल्ले अला चांद उतर आया नूर नूर छाया चांद उतर आया नूर नूर छाया दीवानो झूमो झूमो नूर वाले आका का मिलाद आया नूर वाले आका का मिलाद आया नूर वाले आका का मिलाद आया. सुनते रहे सुबह सवेरे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे.